want to work with him is only because I want to learn from him as an actor. I'm very hungry to learn constantly, and I feel like because I've grown up watching his, acting, I feel like I can learn. So that, in fact, is a very exciting moment for me. So I'm just going to be like a sponge, absorbing all the art and whatever that I can. Okay. Yeah, that's what I'm here to say actually, that I feel like short films are a very popular thing, at least now, because especially the digital space has become such a big medium. People are putting up their own films, kind of, even if it's a short message, even if it has no message, sometimes short films can really leave an impact. Here we are trying in 2 hours, 2.5 hours to leave an emotional impact. Sometimes people do that in just 15 minutes. So here we have 8 different short stories, and I'm quite excited to see it because it's like a, you just kind of leave little incomplete and you get into a whole other story altogether. So it's quite interesting. There's a constant pace to it. Somebody very intelligent will have to take a legend and make a short story, क्योंकि इतना सारा कुछ होगा to talk about, to explain, to express. So I feel like even if for example, my father, if you make a short for my father, I think it will be absolutely impossible. So somebody who can do that, it will be quite interesting. आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारा मूवी प्रोवाइड कर रहा है टू न्यू फिल्म मेकर्स. आई थिंक ये एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, वी ऑल शुड इनकरेज दिस बिकॉज इट गिव्स अपॉर्चुनिटी, ब्रिंग्स न्यू टैलेंट टू द फिल्म इंडस्ट्री. एंड आई थिंक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक 8 मिनट की फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम होता है. उसको इंगेजिंग बनाना, एंटरटेनिंग बनाना, एक अच्छी कहानी सिर्फ 8 मिनट का समय मिलता है, उसमें एक पूरी कहानी समझाना. So I think if any of these filmmakers have made a good short film, I'm sure they'll make a lovely feature-length film, and I look forward to seeing all of them in Bollywood very soon. बिल्कुल, मैं एक्चुअली जब फिल्म स्कूल में था न्यूयॉर्क में, तो मैंने कई सारे शॉर्ट फिल्म बनाए थे और एक से बढ़कर एक ख़राब था हर शॉर्ट फिल्म जो मैंने बनाया था. सो दैट्स वाई आई एम ऑलवेज कीन टू वॉच शॉर्ट फिल्म्स. मैं हमेशा जब FTI में भी जब शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं तो FTI मुझे DVD भेजता है सब शॉर्ट फिल्म्स के. एंड बहुत टैलेंट नज़र आता है, डायरेक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, एडिटर्स, एक्टर्स. So I think it's always a great platform, where you can offer new talent, platform to make films. And also अगर I think हमारा movie also has great mentors in Imtiaz Ali, Anand Gandhi, Vikram Motwani and Vikas Bell. So it's really exciting that something like this is happening in India also. मैं actually खुद अगर मैं बनाना चाहूँगा तो मैं अपने ग्रैंडफादर श्री राज कपूर के ऊपर बनाना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक उनकी लाइफ क्वाइट एंटरटेनिंग है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है. सो आई थिंक दैट कुड मेक अ गुड शॉर्ट फिल्म.